बस 1 मिनट में 46,000 फोटोज और मिलियंस ऑफ पोस्ट जाती है इंस्टाग्राम पे। जितना टाइम आपको इस वीडियो पे क्लिक करने में लगा उससे भी कम समय में। तो सोचो एक इंसान के बारे में जिसका काम है इतनी सारे पोस्ट में से एक पोस्ट को आपकी अटेंशन में लाना। बस यही करती है हमारी आज की गेस्ट हर रोज। हाय, आई एम काव्या एंड हमारी आज की गेस्ट है कनिका, जिनसे हम मिलेंगे टू सी अ डे इन द लाइफ ऑफ अ सोशल मीडिया मैनेजर। Hi, I'm Kanika and welcome to my world of social media management. तो कनिका, सोशल मीडिया मैनेजर बनने का कैसे सोचा? So actually, जैसे Instagram almost 2010 में launch हुआ था, I was one of those first people जिसने Instagram profile बनाया होगा इंडिया में, and it's something that came to me very naturally from the very beginning. और जब ग्रेजुएशन की तो किस में की? तो that was BBA in marketing. और फिर BBA के बाद फर्स्ट जॉब लगी होगी, वो क्या थी? मैंने कॉलेज में इंटर्नशिप में सोशल मीडिया किया हुआ था, so I thought I'll try something new, and I tried influencer marketing right after graduating. That was my first job as a junior influencer marketing creative. Wow. In that agency, I had the opportunity of doing influencer marketing and social media. So again, I came back to social media eventually, but I wanted to try different things. So you have been a social media manager for long now. तो क्या सैलरी रहती है इस जॉब में? So actually that depends a lot on how many years of experience you have, what kind of a client you are working with. I've been doing it since 6 to 7 years now. शुरू में अगर आप जॉब करोगे तो मतलब basic internship salary would be at least 15,000. Job after graduating would probably be 25 to 30,000. Right now it can go as far as getting 1 lakh rupees for a client, and it depends on the industry that you are doing the marketing for. Okay. And अब क्या ये इंडस्ट्री जो है सोशल मीडिया की, ये इवॉल्व हो रही है और किस तरीके से इवॉल्व? So बहुत ज़्यादा evolve हो रही है, उसमें चीज़ें थोड़ी सी complicated भी होते जा रही है because every day we have new features coming up on all platforms. At the same time simplify भी होती जा रही है because ChatGPT, AI features are making our life easier as well. We're able to get better results. Chat boxes, we give them the right prompts and they essentially do the job. आधा जो हम लोग कर सकते हैं वो लोग कर सकते हैं, but पूरा नहीं कर सकते हैं. So, एक सोशल मीडिया मैनेजर एग्जैक्टली करता क्या है? So basically, by the end of the day, social media management is a service. So whether it's an individual or a brand, हम लोग को उनको service करना पड़ता है properly, which means constantly being in touch with them, coordinating with them, and understanding their vision for their brand. Coming to the most specific things that we do as social media managers is definitely come up with a strategy first and have an umbrella idea as to हम लोग कौन से direction में जा रहे हैं. Based on that, come up with many post ideas for a month. We try to plan our calendar at least 15 days in advance, get those posts approved by the client, at least the initial thoughts behind it, and then start and get into the creation process of it. Got it. तो इतना सब करने के लिए आपका वर्क डे कब शुरू होता है? I can start at any time, but because there's so much to do, I start at 8 a.m. I go for a workout first to have a fresh, clear mind before I get into my laptop and my phone for the next few hours. That digital detox is very much needed. And then by 9:30, I'm in office and I start working. इतने सारे लोगों के साथ काम करके, क्लाइंट्स के साथ काम करके, क्या challenges हैं जो आते हैं every day? Sometimes the client's vision and our vision for the client don't really match. So we have to have very good communication with the client to understand at all steps if we are all on the same page. Makes sense. कनिका, बताओ कि सोशल मीडिया मैनेजर बनने के लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं और क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती है? So इसमें as such कोई स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, बट ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन या मार्केटिंग में अगर आपने डिग्री की है इट विल बी हेल्पफुल, बट अदरवाइज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इज डेफिनेटली अ मस्ट टू गेट इनटू द फील्ड. डिग्री की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. अच्छा, और आप लोग क्या टूल्स यूज करते हो हर रोज? हम लोग एक्चुअली बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं. कैनवा डिजाइनिंग के लिए, बेसिक डिजाइनिंग के लिए, थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड डिजाइनिंग के लिए फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर यूज करते हैं. वीडियो एडिटिंग बेसिक के लिए InShot यूज करते हैं. थोड़ा सा मोर प्रो के लिए प्रीमियर प्रो यूज करते हैं. मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐप भी यूज करती हूँ जिसमें हम सब लोग के टास्क लिस्ट लिखे हुए होते हैं. कभी लोग ऐसा बोलते हैं कि बस रील स्क्रॉल करने के पैसे मिल रहे हैं, या जो भी सोशल मीडिया यूज करता है वो सोशल मीडिया मैनेजर बन सकता है. आई मीन लोग तो बहुत ऐसे बोलते हैं, बट अगर इतना ईजी होता
तो ऑब्वियसली हम लोग का जॉब एग्जिस्ट नहीं करता. बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रील्स अगर हम लोग कोई भी एडिट करके अपलोड भी कर रहा है और उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, दैट्स वेयर दे रियलाइज कि द मेन गेम इज अबाउट स्ट्रेटजी एंड डेटा. विदाउट दैट दे रियली कांट कम अप विद अ प्लान दैट विल कंसिस्टेंटली परफॉर्म वेल ऑन द सोशल मीडिया पेजेस. तो क्या ऐसी चीजें हैं जो बिहाइंड द सीन होती हैं और लोगों को नहीं दिखती कंटेंट क्रिएशन में सोशल मीडिया की? जो हम लोग एक रील पोस्ट कर रहे हैं उसकी प्रोसेस शुरू होती है 30 या 40 डेज पहले. पहले हम लोग स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग रील को प्लान आउट करते हैं, उसके बाद उसका स्टेप वाइज फ्रेम वाइज ब्रेकडाउन होता है, फिर शूट ऑर्गेनाइज होता है, उसका मूड बोर्ड भी बनता है कि किस टाइप की ब्रांड के लिए कर रहे हैं, उसके बाद एडिट होती है, उसके बाद उसमें सबटाइटल्स जाते हैं, उसमें हम लोग के कभी कभी वर्जन 20-30 भी बनते हैं एक रील के. ओ बाप रे. तो वो एक रील इतनी सिंपल चीज जो लोग सोचते हैं एक्चुअली इट्स अ लॉट मोर एफर्ट देन दैट. और क्या चैलेंजेस रहते हैं इतने लंबे प्रोसेस में जो एक सोशल मीडिया मैनेजर को फेस करने पड़ते हैं? So definitely trend spotting is something that we have to do our research on कि अभी this new thing has come up, people are really engaging well with it. We have to integrate that in our calendars in real time. मतलब आज सुबह trend spot किया, आज दिन तक प्लान बनाया और फिर शाम को कंटेंट बना के पोस्ट कर दिया. अच्छा, ये जो एल्गोरिथम है ये हमेशा बदलता रहता है, तो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड? So honestly we try to stay a few steps ahead where we follow a bunch of industry reports or industry leaders who are the first ones coming out on social media and speaking about these things. We have meetings in the team with my team. We come up with our own points that Instagram has a new format for posting. Somebody else will realize they have a new broadcast channel feature. So we discuss all of that together because it's very impossible for one person to keep a track of everything. इतने सारे काम के बीच में वर्क लाइफ बैलेंस बन जाता है? थोड़ा डिफिकल्ट था शुरू में वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना, बट देन ओवर टाइम आई रियलाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू कीप गोइंग दिस वे क्योंकि बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाता है. फिर की पॉइंटर्स दैट आई टेक केयर ऑफ इज डेफिनेटली हैविंग माय मॉर्निंग वर्कआउट, डेफिनेटली स्टेपिंग अवे फ्रॉम द स्क्रीन एट सम पॉइंट इन द मिडल ऑफ द डे, गोइंग फॉर अ वॉक विदाउट माय फोन. सो आई ट्राई टू डू मोर एक्टिविटीज व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू अ स्क्रीन. नाइस. और अगर कोई यंगस्टर सोशल मीडिया मैनेजर बनना चाहता है तो उसको क्या एडवाइस दोगे? So definitely I would say try a lot of different things. Internships, freelancing projects, just to convince one person कि आप मुझे अपना social media करने दो एक महीने के लिए. To try things first hand will be the best thing to do, and to study social media and then to do it will be an advantage always. But it cannot be compared to the real life experience of actually handling someone's account. इतने साल हो गए तो क्या एक ऐसा valuable lesson है जो सीखा इस field में? So the most valuable lesson I would say that I've learned very recently after 6 years of doing this is that social media is not a sprint, it's a marathon. Virality and viral moments, of course, people think of कि मेरी एक रील वायरल चली गई और उसके बाद उनकी एंगेजमेंट ड्रॉप हो ही जाती है कैसे ना कैसे. द मेन थिंग टू फोकस ऑन इज कंसिस्टेंसी, consistent posting, engagement, and actually building a community around your brand or your personal brand. So that is what it's like being a social media manager. Thank you for watching this video. आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. मिलते हैं अगली वीडियो में.